Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 23421050. Since these are Delhi numbers, for those listeners who are calling us from outside Delhi, please do prefix 011, the Delhi STD code, before these numbers. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद अनुभा जी। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं, 2331 4444, दूसरा नंबर है 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050 पर। आप फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हमेशा की तरह इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं मेरी सहयोगी अनुभा रोहतगी। Thank you, Vibhuti. Centre approved 56,415 crore rupees to 16 states for capital investment in current financial year. Key domestic indices then flat amid mixed global cues, and oil prices rise more than 0.5%. Okay. पूंजी निवेश की मंजूरी दी। मिले जुले वैश्विक संकेतों की वजह से घरेलू शेयर बाजार सपाट बंद हुए और तेल की कीमतों में 1.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी। Let's begin with the top story of the day. The Centre has approved 56,415 crore rupees to 16 states for capital investment. The allocation is under Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 scheme in the current financial year. The investments cover various sectors including health, education, irrigation, water supply, power, roads, bridges and railways. It aims for giving timely boost to capital spending by the states. Funds for meeting the state share of the Jal Jeevan Mission and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana have also been provided to the states under this scheme to enhance the project pace in these sectors. The 16 beneficiary states include Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Mizoram, Odisha, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal. The Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 scheme was announced in the Union Budget 2023-24 to provide a boost to capital spending by states. It offers 50-year interest-free loans totaling 1.3 lakh crore rupees to state governments during the financial year 2023-24. Dr. Agarwal, how important is this announcement by the Centre today that it has approved over 56,000 crore rupees for states under the capital investment scheme? I think it's a very significant and important announcement, primarily because the economy needs capital infusion at various levels, and the states can probably create the necessary impetus which the economy needs to build on to the multiplier effect that can lead to a much higher growth, specifically reaching out to each and every individual that belongs to the different regions in the country. And we have our first listener of the day today. That is Mr. Inderjeet from Delhi. Mr. Inderjeet, welcome to the program. Please ask your question. Thank you so much, ma'am. My question is, I want to understand a bit about sovereign gold bonds.
what are the benefits and what are the tax implications? Thank you. Sovereign gold bonds are primarily financial instruments which allow you to invest in those financial instruments whereby you are not directly investing into gold, but through those bonds you are making an investment into gold, which is a financial instrument, which gives you an annual return of 2.5% or 2.5% as an interest. Also, at the time when the redemption is there, you will get the gold price that is prevailing at that point of time. And because the time you have invested to the time of maturity, which is about 8 years, there would be appreciation to the amount of investment that would not amount to capital gains, and you're exempted to capital gains in such circumstances. So it's a very good medium which is offered by the government to put people's investment which used to go into gold into productive resources by using the financial instrument. कोलकाता से हमारे अगले कॉलर हैं सुमन घोष। सुमन घोष जी, आप प्रश्न पूछिए। सुमन चौधरी जी, सुमन चौधरी, प्लीज वेलकम टू द प्रोग्राम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। पूरे मार्केट मंत्रा टीम को हमारी तरफ से नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार, आपको भी। प्रश्न पूछिए। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर जैसे हम लोग बैंकिंग में मतलब महीना 2 महीना में जो महीना वाला जो पासबुक खोलते हैं 1000-2000 रुपया करके 5 साल 7 साल के लिए, अगर इस तरह का इन्वेस्ट अगर किया जाए, जैसे SIP हुआ या म्यूचुअल फंड हुआ, जो भी कुछ मार्केट के अंदर यदि इस तरह से यदि 5 साल 7 साल के लिए खोला जाए, तो उसका अगर रिटर्निंग हमें किस तरह से मिलेगा? जी देखिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें आप स्लोली एंड ग्रेजुअली निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा स्टॉक मार्केट्स के अंदर। तो म्यूचुअल फंड्स काफी तरह के आते हैं, जिसमें सिर्फ या तो डेट पे इन्वेस्ट करें या डेट एंड इक्विटी पे इन्वेस्ट करें या इक्विटी पे निवेश करें। और इस इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा आप जब छोटी इकाइयों में मंथली पेमेंट्स करते हैं 500 रुपए से शुरू होकर के जितने भी अमाउंट पे आप करते हैं, तो आप अपना पैसा बढ़ाते जाते हैं और इन्वेस्टमेंट स्लोली करते जाते हैं। वो पैसा निवेश होकर के इन्वेस्ट होता है स्टॉक मार्केट्स में। अगर बॉन्ड में होता है तो बॉन्ड के अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसकी पेमेंट्स आपको मिलेंगी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आपको जो उनका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो NAV में नजर आएगा, जिसे हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। जो आपका टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू होगा उसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। जिस समय से आपने निवेश किया होगा और जिस समय आप उस पैसे को इनकैश करेंगे, उसका बेनिफिट जो है आपको मिलता है मुनाफे के तौर पे। तो ये तरीके होते हैं SIP के द्वारा छोटी इकाइयों में स्टॉक मार्केट्स में निवेश करने के, ताकि आप प्रोफेशनल हेल्प का फायदा उठा सकें। और अगर आप जानकारी ना रखते हो स्टॉक मार्केट्स की, आपको किसी तरीके से रिटर्न्स भी अवेलेबल हों और टेक्निकल जो नो हाउ है उसका भी फायदा हो। And now we've been joined by Mr. Jitendra from Jaipur. Mr. Jitendra, welcome to the program. Please ask your question. हाँ, थैंक यू। मैडम, अभी आज के मार्केट में कौन सा सेक्टर में हम लोग को एंटर करना चाहिए जो भी सस्ता हो और ठीक पोजीशन पे है? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा मैडम, जैसे हमारे पास इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का एक सेविंग प्लान है, तो क्या टर्म प्लान लेना चाहिए? उम्र में 50 वर्ष है, जबकि गवर्नमेंट का मैंने जीवन ज्योति बीमा ऑलरेडी लिया हुआ हो, सजेस्ट करिए। जी देखिए, सेक्टर्स में जहां पे बात करें, आजकल जो राइजिंग सेक्टर्स हैं वो एक रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, पर उसका जेस्टेशन पीरियड काफी लॉन्ग है, तो अगर आप उनको वेट कर सकते हैं और आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट्स की जानकारी नहीं रखते तो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि आप 50 वर्ष के हैं, तो आप कोशिश करें कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश करें, जिसमें खास तौर पे बैलेंस्ड फंड के ऊपर या फिर डेट फंड्स के ऊपर निवेश करें, ताकि इक्विटी की मात्रा कम रहे और आपका जो प्रिंसिपल है उस पे आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अ रिटर्न
जो है मिलता रहे। जहां तक लाइफ इंश्योरेंस की बात है, टर्म प्लान आपको तभी फायदा करता है जब आप सोच रहे होते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद किसी को जो है पैसा मिल जाएगा। तो वो जो टर्म प्लान है उसका फायदा आप तभी उठा सकते हैं अगर आपके सर्वाइवर्स हों। तो अगर आपको लगता है कि आपके सर्वाइवर्स हैं और आप उनको पैसा देना चाहेंगे अपनी मृत्यु के बाद, तब आप टर्म प्लान्स का फायदा उठाएं। हमारे श्रोता संजीव ने गाजियाबाद से फोन किया है। जी हाँ, आप प्रश्न पूछिए संजीव जी। जी नमस्ते यामिनी जी। नमस्ते, प्रश्न पूछिए। जी मेरा सर एक बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे अभी 30 जून लास्ट डेट है पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए, तो इसकी लिंक करना कितना मैंडेटरी है लेमैन इन्वेस्टर के लिए जो रिटर्न फाइल नहीं करते? जी थैंक यू। जी, जो रिटर्न फाइल नहीं भी करते उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर लें। उससे फायदा यही रहता है कि कभी आपको जब आगे चल करके रिटर्न फाइल करने हो तो दिक्कतें ना हो। और ये भी जरूरी है कि आपका पैन कार्ड वैलिड रहे, उसके लिए आधार को आप लिंक कर लें। And next caller is Mr. Pankaj from Mumbai. Mr. Pankaj, welcome to the program. Please ask your question. Hi, good evening. I want to ask about the link between high interest rates and growth. Now the interest rates of Fed and even RBI are quite high. They have increased the rate to control inflation. But can that have an impact on growth and the impact of which we will see in the next year or so? Thanks. When we talk about growth, it's important to understand that the growth comes from investments in the economy, and these investments are in the form of capital investments that create a multiplier effect. What it means is, supposing you start a factory or you start a unit, you employ people and you give them money and income, and then with that income they start demanding goods. Now this investment, when people, business houses or firms tend to make, they take loans from banks, and on those loans the interest rates are an important factor. If the interest rates are high, the ability to take loans usually reduces, and automatically there is a lesser investment that goes into the market. So it is a challenging aspect for the central banks or the government to ensure that the interest rates remain in a regime that is conducive to growth and investment in an economy. And before we move on to our next caller, who is from Delhi, let's hear about how the markets behave today from Vibhuti first. जी, शेयर बाजार का हाल ये है कि मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक आज सपाट स्तर पर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 63,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,700 के स्तर के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 9 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 62,970 पर बंद हुआ। निफ्टी 26 अंक ऊपर चढ़कर 18,691 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 1.04% की बढ़ोतरी हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.71% की बढ़ोतरी हुई। Key domestic indices today ended flat amid mixed global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended below the 63,000 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled near the 18,700 level. The Sensex closed marginally down by 9 points or 0.01% to end at 62,970. The Nifty moved 26 points or 0.14% up to close at 18,691. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 1.04%, while the small-cap index added 0.71%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 20 firms appreciated while those of 10 fell. Maruti was the top gainer as it climbed 1.7%, followed by Tata Motors, which rose 1.5%. Titan gained 1.1%. On the other hand, TCS declined 0.9%, Reliance fell 0.8% and NTPC slipped 0.7%. In sectoral indices at BSE, all sectors locked gains except the energy sector, which lost 0.2%. Healthcare index surged 1.5%, while auto and consumer durables sectors gained 1% each. Consumer discretionary sector rose 0.9%. The overall market breadth was negative as shares of 1,860 companies advanced while those of 1,783 declined. A total of 174 shares remained unchanged. And let's take the call from Delhi, which is from Mr. Prem Pujari. Mr. Pujari, welcome to the program. Please ask your question.
हाँ जी मैडम नमस्कार जी नमस्कार। जैसे कि जो आधार से लिंक लाने के लिए बात हो रही है आपका, तो इसके लिए जो जीरो बैलेंस का खाता रखते हैं जिसका जो दिव्यांग भी है नेत्रहीन है, तो क्या ऐसे शख्स को भी जिसका अकाउंट में सिर्फ अकाउंट है जीरो बैलेंस का और उनके पास अपना आधार कार्ड है और वोटर आई कार्ड है, इसके अलावा उनके पास पैन कार्ड उन्होंने बनाया नहीं, बनवाने की जरूरत भी नहीं है उनको, तो ऐसे लोगों को भी आधार से लिंक कराने की क्या समस्या आएगी ये आप बताएंगे। और ये एक चीज और पूछेंगे कि अगर दिव्यांग के लिए ये फैसिलिटी 1000 रुपए का जुर्माना इसको भी लगना लाजमी कर दिया क्या, अगर इसको लिंक कराना जरूरी पड़ता है तो? जी देखिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं तो लिंकिंग की कोई जरूरत नहीं है, पर जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं वो केवाईसी नॉर्म्स में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जिसमें आधार कार्ड एक जो है मान्यता दी जाती है जो जिससे आप जो है अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं और अपनी जानकारी दे सकते हैं। जहां तक पेनल्टी की बात है, पेनल्टी तभी लगेगी जब आपका जो पैन कार्ड है वो लिंक नहीं होता आधार पे। तो इसलिए अगर आपका पास पैन कार्ड है ही नहीं और आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी, ना आगे जरूरत पड़ने वाली है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लिंक कराएं या ना कराएं। जी, थाने से हमारे अगले श्रोता हैं सुभाष। सुभाष जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, प्रश्न पूछिए। Madam, I want to ask one basic question. Can income tax return submitted once can be revised in the same year? And if it is revision results into which is tax payable, earlier it was not payable at all, whether they will levy any penalty on that? Mr. Subhash, can you please repeat your question? I have submitted my return. Is that, and that is nil tax. But now I observe that I have got some tax payable. So whether I can revise my return, and on revision whether they will levy any penalty. Okay. See, when an income tax return is submitted, it gets assessed. And when it gets assessed, whatever tax liability you have computed, they will evaluate it towards their assessment. And if they feel that your computation and your payment is lower than their assessment, they will then they will notify to you that the following taxes have to be paid by you. When they do that, after that you cannot file for rectification. The rectification of an income tax return can be filed till the time is the last deadline of filing the income tax return. So as many times you want to file, the rectification can be only done till the last date of filing the income tax return. After that, once the assessment has been done, you have to pay a tax whatever is due to you as per the assessment. As far as penalty is concerned, because you will not pay, you have not paid the taxes so far and they become due, there is a certain amount of a penalty associated with it, which you pay. Let's say for when the government asks for advance tax and you don't pay for it, there is a penalty associated with it. So you have to pay for that also. Even when you pay self-assessment tax, they will show a penalty. So you are supposed to, they will give you, when you get that notification, you will say pay taxes over there, and you can, using your net banking or the other means, pay taxes and retain the challans that are given over there. And we already have our next two callers from Mumbai, but before we take their calls, let's hear about how the rupee behaved from Vibhuti. जी, विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 102.75 पर कारोबार कर रहा था। And the next caller is Mr. Ratnakar from Mumbai. Mr. Ratnakar, welcome to the program. Please ask your question. Hello, good evening, sir. मेरा सवाल है कि जो हम इनकम टैक्स भरते हैं उसका जो टैक्स है वो 26A में दिखाई देता है, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि हमारे पास एक पैन नंबर है, लेकिन
उनका टैक्स भी कट हो गया, लेकिन वो 26A में दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल है। और आने वाले वीक में शेयर मार्केट की चाल कैसी रहेगी कि ऐसा ही रिबाउंड में ये रहेगा? जी देखिए, जब टीडीएस काटा जाता है और जो भी टीडीएस काटता है वो जमा करता है टीडीएस आपके इनकम टैक्स ऑफिस में आपके पैन कार्ड को लेकर के, और उसके साथ एक आइडेंटिफाइड नंबर होता है। जब वो या तो वो गलत नंबर पे या गलत व्यक्ति के नाम पे अगर वो टीडीएस जमा हो जाए तब वो आपके 26AS में नहीं रिफ्लेक्ट होता। उसके लिए जिस व्यक्ति ने आपका टैक्स काटा है उससे आपको रिक्वेस्ट करनी होती है कि आप मुझे जो टीडीएस काटा है उसका फॉर्म दीजिए, और मैं फिर उस फॉर्म के बेसिस पे अपने रिटर्न भर सकता हूं, सर्टिफिकेट जो वो होता है, और उसका जो टीडीएस है उसका बेनिफिट उठा सकता हूं कि ये पेमेंट मैंने कर रखी है। ज्यादातर जो टीडीएस है वो 26AS में दिखता है, पर ये कुछ जगहों पे देखा गया है आमतौर पे कि कहीं ना कहीं कोई वर्ड या कोई अल्फाबेट मिस होने की वजह से ये गड़बड़ी हो जाती हैं। और दूसरे सवाल में ये जानना चाह रहे हैं कि शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी? जी देखिए, शेयर मार्केट अभी वॉलेटाइल रहेगा पर काफी हद तक रिजिलियंट है। ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट्स के जो वरी रही है मार्केट में कि बढ़ सकते हैं, खासतौर पे फेडरल रिजर्व बैंक की स्टेटमेंट के बाद जो है शेयर मार्केट ने रिएक्ट किया है, जिसकी वजह से हमें देखा जा रहा है कि थोड़ा सा गिरा है और अभी भी फ्लैट मूवमेंट दे रहा है। तो शेयर मार्केट आगे आने वाले समय में, क्योंकि एक बहुत ही पॉजिटिव जो है सिनारियो है, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूएस विजिट के बाद और उनके भाषण के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने भारत के बारे में लोगों को बताया है, उस सभी से, और जिस तरीके से 2047 में हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उस सभी को लेकर के एक पॉजिटिविटी है। शेयर मार्केट में रेजिलियंस रहेगी। इसी बीच मुंबई से हमारे श्रोता हैं संजय परमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। बिफोर वी टेक मिस्टर परमार्स कॉल, लेट अस टेक अनदर कॉल फ्रॉम again Mumbai, and this is from Mr. Hasmukh Dedia. Mr. Dedia, welcome to the program. Please ask your question. Yeah, good evening, Market Mantra. Can you hear me? जी। Yeah, I just wanted to ask Yamini Madam, okay, which are the sectors basically which you recommend, which can take a lead from here, because we are already at the 24 or the 28 P multiples, an all-time high. Thank you. Well, IT and pharma remain the evergreen sectors for investments. Also, capital goods in infrastructure will be the key sectors. The sunrise sectors would be the renewable energy, and many of these sectors which would focus on how transformative structural changes can be brought about in living or lifestyle changes that bring about sustainability in environment will also be some of the stocks which people would look at, especially into green financing or green funding or green investments. These will also be some important stocks. जैसे कि पहले चर्चा हुई, संजय परमार जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। हाँ सर, तो ये पैन कार्ड और आधार कार्ड जो लिंक करने की बात चल रही है, तो दोनों मंत्रालय गवर्नमेंट के हैं, तो वो एक ही जगह से वो लोग आपस में डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करके नहीं कर सकते? इतना पब्लिक को तकलीफ होता है इसके अंदर। जी देखिए, पैन कार्ड आईटी डिपार्टमेंट इशू करता है और आधार कार्ड यूआईडीआई करता है। दोनों ही एक अलग संस्थान है और दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अलग है। आप पैन कार्ड के अंदर आपके जो इनकम टैक्स की डिटेल्स हैं, आपकी जो इनकम्स हैं जिस पे आप टैक्स पे करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होती है। आप अगर अपना आधार कार्ड देखें, जब आपने बनवाया होगा तो आपका बायोमेट्रिक लिया होगा, आपकी जो रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो है, और आपको एक पहचान जो जिसे वो कहते हैं कि ये एक पहचान पत्र है, वैसे इस्तेमाल किया जाता है।
आधार में क्योंकि बायोमेट्रिक है इसलिए पैन कार्ड के साथ लिंक किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि सेंट्रलाइज किया जाए सिस्टम को और जितने भी कार्ड्स हैं या जो भी आपको फायदा मिल सकता है लिंकिंग का वो आपको मिल सके एज एक इंडिविजुअल की तरह या एक व्यक्ति की तरह। वक्त है एशिया और यूरोप के बाजार के हाल जानने का। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.5% बढ़त को छोड़कर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.5% गिरा। हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% गिर गया। जापान के निक्केई में 0.3% की गिरावट हुई और सिंगापुर का स्ट्रेस टाइम्स 0.1% फिसल गया। दिन के कारोबार में यूरोपीय बाजारों में मिलाजुला रुख रहा। लंदन के फुटसी और जर्मनी के डैक्स दोनों में 0.3% की गिरावट आई। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.1% के ऊपर कारोबार कर रहा था। Dr. Agrawal, we were talking about the RBI. One of our listeners actually asked a question about growth earlier on in the program. So talking about India's growth and the fact that in this month also when the RBI meeting was held, MPC meeting, the RBI decided to pause the interest rate hikes. What is your assessment? When is the cycle going to turn? Because obviously the focus here is to contain inflation. But when is in your assessment, the cycle going to turn and maybe RBI will start thinking in terms of cutting down the interest rates? Well, I don't see it in the near future in terms of cutting the interest rates because the challenge of inflation continues to hound the world economies. The Bank of England has already raised the interest rates and the Fed is aggressive. And we have to maintain parity in terms of interest rate differentials between the other nations and us. While we are trying to provide an accommodative stance in terms of our growth, which is primarily because we see a 6.5% growth in the next year, which is a very positive and the fastest growing economy, and the large number of reforms and the changes that have been going on, they are yielding results. I don't really see very soon the interest rates coming down, but yes, if the situation in many of the other economies improve, we are likely to see a change over here as well. Moving on, India is pioneering sustainable textiles, contributing to lesser carbon footprint and promoting circular economy. This was stated by Minister of Textiles, Commerce and Industry and Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Piyush Goyal, in his address at the inaugural function of the 69th India International Garment Fair at Greater Noida in Uttar Pradesh today. He said the Indian textile industry has made a mark in the world with its innovative and attractive products. Mr. Goyal encouraged the industry to focus on quality and youth to innovate and develop new technologies for better quality products. He highlighted that the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel PM Mitra Park are being established across 7 states of the country with the objective of promoting India's textile sector in a significant manner. Moving on to commodities, oil prices rose more than 0.5% today. In intraday trade, Brent crude was trading at $74.26 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $69.45 per barrel when reports last came in. वक्त है सोना का हाल जानने का। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध के लिए सोने की कीमत आज 300 रुपये बढ़ गई। सोना 58,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक जुलाई अनुबंध के लिए चांदी 1,150 रुपये बढ़कर 69,235 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,942 और 40 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह दिन के कारोबार में चांदी $23 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी। Dr. Agarwal, very quick comment on the oil prices given the political uncertainty that's happening in Russia, which is one of the biggest producers. Well, it would definitely affect the oil prices and they can see a rise in the coming future. Dr. Agarwal, thank you so much for coming to the program and answering the queries of our listeners and having this discussion on the important stories of the day. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Centre approved 56,415 crore rupees to 16 states for capital investment in current financial year. Key domestic indices went flat amid mixed global cues. And oil prices rise more than 0.5%.
And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 6:30 p.m. with yet another edition of the program. Till then, this is goodbye from the entire team of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.